Hello students, today I will discuss the concept of sparse matrix. And in this lecture we will see how we can represent sparse matrix using 3-column representation also. So the sparse matrix is a two-dimensional array. It is a two-dimensional array that has minimum number of non-zero एलिमेंट्स. तो एक ही एरे होता है, टू डायमेंशनल एरे होता है जिसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मिनिमम होते हैं. और वी कैन ऑल्सो से दैट इट हैज़ मेजॉरिटी ऑफ ज़ीरो एलिमेंट्स. Now why do we use sparse matrix? The simple reason is that sparse matrix reduces scanning time. Because we can represent a sparse matrix in a way that we can only traverse non-zero elements. तो हमें जो ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए स्पार्स मैट्रिक्स हम स्कैनिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं. सो इट रिड्यूसेस स्कैनिंग टाइम. तो अगर एक स्पार्स मैट्रिक्स कैसे हो सकती है, जैसे ये एक स्पार्स मैट्रिक्स हो सकती है 0 1 0 0, then 5 0 4 0, 0 2 0 3 0 3 0 and 0. If you see this matrix, then you can see that majority of the elements are 0. And the non-zero elements are very few. So before going further, I am just denoting the rows. This is row 0, row 1, row 2, row 3. This is column 0, column 1, column 2 and column 3. So which are the non-zero elements? There are very few non-zero elements. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So the number of non-zero elements in this sparse matrix is only 6. And the total number of elements are 4 into 4, 16. So out of 16, only 6 non-zero elements are there in a sparse matrix of 4 cross 4. So we can use this sparse matrix to find the particular position of the value or find that the value is there in the matrix or not in a less number of time. Now let's see different types of representation of sparse matrix. In this class I am going to show you 3-column representation of sparse matrix. In the 3-column representation, an array of 3 columns is used. So you have to write this. In this array of 3 columns is used, where the first row contains header row. That is the total number of rows, total number of columns and total number of non-zero elements. So now let's see the example of representation of this particular matrix using 3-column representation. तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले एक ड्रॉ कर लेता हूँ मैट्रिक्स एरे, रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज. So this is the array that you have to use. जो सबसे पहली रो होती है 3-column representation में, that contains total number of rows. So this is the first row. So the first row contains total number of rows.
अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे 4। दिस विल कंटेन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, सो कॉलम्स आर ऑल्सो 4, सो 4 एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स वो आपके आ जाएंगे यहाँ पे 6। तो जो पहली रो है वो क्या करती है, कंटेन टोटल नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड नॉन जीरो एलिमेंट्स। Then comes the second row of this 3 column representation. This is row 1 and the second row of 3 column representation. Second row में आप एक एक करके rows को ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। That is row 0 में कॉलम 1 में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है 1। सो 0th रो में फर्स्ट कॉलम में एक वैल्यू है नॉन ज़ीरो जिसकी वैल्यू क्या है 1। सिमिलरली इसके आगे देखेंगे रो 1 में कॉलम 0 में नॉन ज़ीरो वैल्यू है 5 और इसी रो में एक सेकंड कॉलम में नॉन ज़ीरो वैल्यू है 4। सिमिलरली सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में नॉन ज़ीरो वैल्यू है 2 एंड सेकंड रो के थर्ड कॉलम में नॉन ज़ीरो वैल्यू है 3 एंड फाइनली थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में नॉन ज़ीरो वैल्यू है 3। So this is how you will draw a 3 column representation of the sparse matrix. Now by using this sparse matrix it is very easy to find the values of non-zero elements. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on data structure and other computer science related subjects. Thank you.